Hello everyone, this is Japneet. Welcome back to my channel. I hope you guys are good. Our today's video is all about writing and I'm gonna share 5 important tips. I usually give these tips to my online students and today I'm gonna share these with you guys. Before starting this video, there's a question for you guys. Please try to answer this question in the comment section. Do you walk a lot? क्या आप ज़्यादा walk करते हो? Pause this video and try to answer it in the comment section. The first very common tip is basic format of every task, whether it is agree or disagree or discuss both views. हर चार्ट का अपना एक अलग फॉर्मेट होता है. बस आप किसी एक फॉर्मेट को उठाओ, चाहे वो मेरे सैम्पल आंसर से आप उठा सकते हो जो कि मैंने यूट्यूब पे डाले हुए हैं, या फिर अपने किसी टीचर से जिसे आप कोचिंग ले रहे हो आप वो यूज कर सकते हो. देखो, कंटेंट जो होता है आपका, चाहे राइटिंग का चाहे रीडिंग का है, आप इकट्ठा मत करो. मैंने एक इंटरव्यू भी डाली थी स्टूडेंट के साथ. शी सेड द सेम थिंग दैट शी नेवर गैदर्ड मटेरियल फ्रॉम डिफरेंट वेबसाइट्स और टीचर्स. एक फॉर्मेट रखो, हर चार्ट का अलग से. बस आपको पता होना चाहिए कि ये डिस्कस बोथ व्यूज है तो कौन सा फॉर्मेट है, ओपिनियन पूछा है उन्होंने तो कौन सा फॉर्मेट है. If you guys don't know about the formats, then I have uploaded 6 to 7 videos on task 2 including all the formats and the videos are available in the playlist section. There is separate playlist for task 2. एक बार आप देख सकते हो वहां पे जाके. But still, अब तक आपने जो सीखा है, जो फॉर्मेट सीखे, आप वही यूज करो. उससे अलावा बस मटेरियल कलेक्ट नहीं करना. जो आपको याद है, जो आपको अब तक पता है, आप वो यूज करो. That's it. Second very important tip is try to attempt task 2 first. When I was a student during my preparation time, my teacher used to tell me that Japneet, try to attempt task 2 first because it has more weightage. Task 2 का स्कोर ज्यादा होता तो definitely आप उसको पहले attempt करो. Task 1 पे आप बाद में move करो. And I know most of the students do task 1 in the first place, but try करो कि task 2 आप पहले लिखो, अभी से ही आदत बना लो ताकि पेपर में जाके, टेस्ट में जाके आपको कोई भी दिक्कत ना आए. Third tip is vocabulary. Now most of the students will say that sir we want to add vocabulary, and कौन सी vocabulary add करें, है ना, वहां पे वो stuck हो जाते हैं. And कुछ students ऐसे हैं कि वो vocabulary बिल्कुल भी add नहीं करते and they are comfortable with it. So which one is correct? Adding vocabulary or not adding vocabulary? See, recently I uploaded my student's interview. She said she never used a single word of vocabulary. Even in the test, she scored 7 in writing. The interview is there on the channel. If you haven't watched it, please make sure to watch it because you will come to know about a lot of things. If you guys really want to add vocabulary, then try to avoid fancy and high-end vocabulary. Just try simple vocabulary. In place of properly, you can use appropriately. In place of brought in, you can say ushered in. काफी सारे ऐसे वर्ड्स हैं मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे. वोकेबलरी के 7-8 पार्ट्स हैं, वो भी आप देख सकते हो अपनी वोकेबलरी इंप्रूव करने के लिए. बट स्टिल आई जस्ट वांट टू से वन थिंग, अगर आप सीख रहे हो वोकेबलरी देन प्लीज एक तो स्पेलिंग उसके आपको याद होने चाहिए. दूसरी चीज ये है कि आपको उसका जो इसको इम्प्लीमेंट करने का वे आना चाहिए. दैट इज अ मस्ट. Our next tip is try to add as much complex structures as you can. I have made a video on 3 powerful writing structures, including although, gerund, and there was one more structure I don't know. क्या क्या ऐसे structures हैं जो कि आप add कर सकते हो? Although हो गया, despite हो गया, gerund sentence हो गया, ठीक है, whether or, either or, neither nor, not only but also, and many more. If you guys haven't watched my complex structure videos, then please go through the links given below in the description. उससे आपको सारे के सारे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स क्लियर हो जाएंगे. और भी लिंक्स है, मैं आपको शेयर कर दूंगा. बस पढ़ने वाले बनो, दैट्स इट. बिफोर मूविंग टू द लास्ट स्टेप गाइस, आई वांट टू रिमाइंड यू कि क्वेश्चन पूछा था मैंने स्टार्टिंग में. अगर आपने उसका आंसर अभी तक नहीं दिया तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर दो. फिफ्थ एंड लास्ट स्टेप इज बी ऑन पॉइंट. ऑफ टॉपिक नहीं होना, जस्ट पॉइंट पे रहो. If they ask, discuss both views. So just try to discuss both the views. That's it. Try not to give your own opinion. But yes, if they asked, then go for it. I hope these 5 writing tips are fruitful for you. If you really like these tips, then please subscribe to this channel and like this video. Keep sharing, keep supporting, and thank you guys.